भव्य शुभ संध्या रे मु रमेश चंद्र बिस्वाल सुदूर आफ्रिकार लागोस सहर रु प्रथमतः महाबाहु चतुर्धा मूर्ति महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु को मोर नमस्कार एवं आज ये शुभ संध्या रे मु आमर SJCCWW एवं श्री जगन्नाथ टेम्पल ट्रस्ट तरफ समस्त भक्त मानकु जगन्नाथ महाप्रभु डिभोटी मानकु आज यही समय रे स्वागत करुछि एवं आपण मानकु हेलो आपण मानकु स्वागत करुछि एई हमर आज श्री जगन्नाथ महाप्रभु का परंपरा विषय रे जे वेबिनार होई आछि SJCCWW प्लेटफॉर्म रे आज एई परंपरा रो कथोपकथन हमर अछंती स्वामी ब्रह्मनिष्ठानंद सरस्वती मु तांको मध्य स्वागत जणाउछि एवं हमर SJCCWW रो ट्रस्टी मान अच्छा डॉक्टर भगवान पंडा महोदय अच्छा मोहर प्रेसिडेंट एवं ट्रस्टी ऑफ SJCCWW डॉक्टर हर प्रसन्न दास ट्रस्टी ऑफ SJCCWW मिस्टर मनोज पत्र ट्रस्टी ऑफ SJTT बैंगलोर एवं हमर SJCCWW ट्रस्टी अच्छा मिस्टर सुकांत साहू यूके रु अच्छा ट्रस्टी ऑफ SJCCWW मिस्टर बसंत कुमार पंडा he is trustee of SJCCWW also from Ahmedabad. Mr. Sangram Kesari Patnaik, trustee of SJCCWW. He is from Port Harcourt, presently in Puri and Bhubaneswar. So I welcome all of you to this event. Also, now I am welcoming Mr. Kamesh Prasad Panda, the managing trustee of SJTT Bangalore. Mr. Punyashlok Kuntiyaji, also he is one of the trustee. Mr. Manoj Kumar Patra, he is one of the trustee. Sirs, you are welcome to this event. Now I welcome our speaker Mahasaya, Swami Brahmanishtananda Saraswati again. You are welcome to this event. Now I welcome one and all from across the globe to this event of SJCCWW. Let's hear from him, our Swamiji. Before that, I will hand over this meeting events to proceed by the managing trustee of Shree Jagannatha Temple Trust Board, Bangalore, Mr. Kamesh Prasad Panda. Panda आज्ञा आगु कया मीटिंग टाकू बढ़ेबे. जय श्री जगन्नाथ. जय श्री जगन्नाथ. जय श्री जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. मो कामाख्या प्रसाद पंडा बेंगलोर रु श्री जगन्नाथ टेम्पल ट्रस्ट रु मु SJCCWW रो मैनेजिंग ट्रस्टी श्री रमेश चंद्र बिस्वाल को अनेक अनेक शुभेच्छा जणाउछि आउ तांको वेलकम करछि. स्वामी ब्रह्म सच्चिदानंद सरस्वती को पूजनीय को मु मोर नमस्कार जनाउछि. अन्य ट्रस्टी SJCCWW रो श्री रमेश चंद्र बिस्वाल, संग्राम पटनायक बाबू, भगवान पंडा बाबू, सुकांत साहू बाबू, हर प्रसाद बाबू समस्त को मु स्वागत जनाउछि. श्री जगन्नाथ टेम्पल ट्रस्ट बेंगलोर प्रथम थर पई ए टाइप रो गोटे समावेश रे आयोजन रे संपृक्त आपण माने हम करेबार सुजोग दैथिबारु मु विशाल बाबू को बहुत धन्यवाद ज्ञापन करछि. हमर आउ जने आदरणीय ट्रस्टी श्री मनोज पात्र मध्य ए अनुष्ठान जने आपण ट्रस्टी अछंती. एहा हम ट्रस्टी मान पई एक गर्वर विषय. एज यूजुअल जेमती हम माने ओडिया माने एक जगह रे हेले से शहर रे गोटे गणेश पूजा करबा, सरस्वती पूजा करबा कि जगन्नाथ मंदिर गोटे करबा, ए टाइप रो हमर भी एठी भी
माने 1996 रे जेतबे ओडिया इंजीनियर माने बहुत परिमाण बेंगलोर को आसिले आम मन भितर गोटे हितिला जे गोटे गोटे जगन्नाथ मंदिर करिया बोली रे 1999 मसिया रे आमे गोटे ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करथिलु जोथिरे आज डेट 14 जण हम मेंबर अछंती या छडा 8 जण विजयक अछंती आ 8 जण आ 3-4 जण खंडे मैनेजरल स्टाफ अछंती तो 1999 मसिया रे हमर ट्रस्ट रजिस्टर हेतिला सेतबेलको कर्नाटक गवर्नमेंट को तरफ हमको प्राय 11,000 स्क्वायर फीट जगह मिलथिला बेंगलोर रो साउथ ईस्ट एरिया रे साउथ ईस्ट साइड रे गोटे एचएसएल लेआउट जगह अछि जोटि आगुरु गोटे कैंटोनमेंट थिला गवर्नमेंट रो से कैंटोन पाखरे गोटे आगरा गोटे गोटे छोटो कस्बा गोटे छोटो टाउन गोटे छोटो बसती अछि सेठी जगहटे मिलथिला हमको से जगार विशेषत्व होछि आज्ञा सेठी प्राय 22 टा खंडे हम जगन्नाथ मंदिर जोटि अछि से एरिया रे प्राय 22 टा खंडे हिंदू मंदिर अछि या छडा गोटे गिरजा घर भी अछि गोटे मस्जिद भी अछि त माने गोटे थिकली पॉपुलेटेड रिलीजियस एरिया से जगहटा सेठी हमको गोटे जगहटा मिलथिला से जगहटा मिलवा पय हमको सेठर लोकल लोक भी बहुत हेल्प करथिले जेठी गोटे पुरी का भगवान का मंदिर बनेगा विष्णु का मंदिर बनेगा लोकन बहुत खुशी है से जगहटा हम देथिले से जगह रे 2004 मसिया रे हम सेठी गोटे फाउंडेशन ले डाउन करैथिलु फाउंडेशन ले डाउन करके गोटे जगन्नाथ मंदिर पुरी जगन्नाथ मंदिर आर्किटेक्ट टाइप रे गोटे बने आमे स्थिर करथिलु जेहेतु जगह हमर कम थिला गोटे 2 महला विशिष्ट गोटे मंदिर हबो वास्तु शिल्पी हमर सब ओडिसा रो आसीबे आ ओडिसा रो ही रॉ मटेरियल लेके आसीबे मंदिर करिया पे हम स्थिर करथिलु तो 2004 मसिया रे पद्मश्री श्री मधु पंडित दास जी इस्कॉन रो मुख्य अछंती सी एटारो फाउंडेशन ले डाउन करथिले आ शिल्पी पद्म विभूषण स्वर्गत रघुनाथ महापात्र अपन जानथिए तांकर माने तांकर सुपरविजन रे ए पूरा मंदिरटा तयार हेतिला एटा बेसिकली गुड आर्टिस्ट गुड स्ट्रक्चर आरसीसी स्ट्रक्चर ता ऊपर सैंडस्टोन रे हम मंदिरटा करछु जोटा गुड पूरी मंदिर टाइप रे हम बना पे ट्राई करथि ये जो हमर जो जगन्नाथ मंदिर अछि तार पारिपार्श्विक रे चारटा मंदिर भी अछि विमला मंदिर लक्ष्मी मंदिर हनुमान जी का मंदिर और शिव का मंदिर चारटा मंदिर अछि आ गोटे छोटो नवग्रह मंदिर भी हम करछु से भितर ए मंदिरटा तयारी हला 2015 मसिया रे पुरी गजपति महाराज दिव्य सिंह देव से एटा को माने तांको कर कमल रे प्रतिष्ठा एटा हेतिला से दिन टू ए मंदिर रे हमें सब प्रकार पर्व करछु मुख्यतः रथ यात्रा पर झुलन यात्रा बामन जन्म शिवरात्रि लक्ष्मी पूजा विश्व संक्रांति शिवरात्रि आपणकर जो सावित्री अमावस्या ए प्रकार विभिन्न प्रकार मझिरे मझिरे आमर कार्तिक मास रज होची माने जते ओडिया माने जते ओडियांगर जते सब पर्व पड़ी सब गुडा हम एठी करबा पे ट्राई करछु एथिरे बहुत लोक हमर लोकल ओडिया को छाडी करी प्राय अधा अधिक लोक जो माने नॉन ओडिया लोक माने कन्नड़ा होंतु बंगाली कि आपण बिहारी सब प्रकार लोक एठी आछुंती आ समस्त बहुत भक्ति भाव रे जगन्नाथ दर्शन पाउचंती जो माने पुरी होचंती से जाउचंती माने पुरी जाउनांती से माने भी एटार दर्शन पाउचंती आ गोटे जिनस प्रति शनिवार रविवार दिन आम ये सन्ध्या गोटे भजन समारोह भी होची लोकल जो ओडिया पिला माने सब बसिक से गोटे भजन करचंती बहुत सुंदर वातावरण रहउची ता छडा प्रति शनिवार आम प्राय प्रतिदिन प्रसाद करछु समस्त पई आ शनिवार रविवार किंतु बहुत भावरे ओडिया लोक आछुंती एठिके परिवार सहित आछुंती प्रसाद पाउचंती प्राय 1500 लोक प्रसाद पाउचंती हमर प्रति शनिवार रविवार या छोड़ा विभिन्न समय विभिन्न माने वीवीआईपी जो कहते आपण जो मान सरकारी हो कि बेसरकारी हो कि माने जमती आपनकर साधु सन्त एम विभिन्न समय एठाकू विजिट रोची प्राय आम ये 7 लाख लोक हेलुणी बेंगलोर सहर आप जानते 7 लाख लोक है विभिन्न जगह से चाहिदा अनुसार छोट छोट जगन्नाथ मंदिर होती किंतु ए जो जगन्नाथ मंदिर अच्छी यार विशेषत्व होची एठी दूर दूर भी लोक आछन मान तांको एरिया रे जगन्नाथ मंदिर भी हबाकू जाउची तथापि से लोक गुडा आसिक एठी रथ यात्रा ये गुडा रे मानकर माने सब मिसी के एठी जो करिया गोटे भाईचारा रहिए माने गोटे गोटे आइकॉनिक जो गॉड को हम एठी रखी के गोटे 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 कल्चर ये को हेरिटेज को हम बचाव चाहू सेटा हम करिया जो हेबाकू जाउची आ आपण मानकर भी
समस्त प्राय रिलेशन समस्त पिला माने एठी सब अछंती आपण माने भी मझी मझी आसंती एठू आसी जगन्नाथ सान्निध्य लाभ करंतु मु समस्त को इनवाइट करछि आ आज जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट को आपण मान को ये जो समावेश रे माने संश्लिष्ट रही करी ये जो ये करिया पे आपण माने सूचना देथिबारु मु एसएस जेसीसीडब्ल्यू को बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करछे बहुत धन्यवाद रमेश बाबू मनोज पात्र समस्त ट्रस्टी को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच जय जगन्नाथ Jai Shri Jagannatha. I request Manoj Babu to make the program more things in the program according to the program schedules. Manoj Babu, the trustee of SJCCWW. जय जगन्नाथ समस्त समस्त मोर प्रणाम आशा करछि समस्त भलरे थिबे अच्छा किछि आरंभ करिया पूर्व मु कहबा के चाहूछि जो हमर ओडिसी डांस जे करिवे तांकर जो से चार्ट रे पकैचंती सौभाग्य दास बोली 9B067487 तांकु टिके पोस्ट कर देले से ओडिसी डांस ता से माने करिवे हेलो आज्ञा सर हेलो ओके थैंक यू वेरी मच थैंक यू regarding mu to duty jagaru achi mu I am a trustee also in SJTT Shree Jagannatha Temple Trust Agara Bangalore amar ye managing trustee Kamashi बहुत बढ़िया भाव में आमर केबेटू आरंभ होइतला कोन हेतला को बढ़िया भाव में व्याख्या करिले एटा हमें सेकंड टाइम भी जॉइन हिचु सेट समस्त को SJCCWW रो समस्त को धन्यवाद जनाउछि अच्छा रिगार्डिंग SJCCWW समस्त को जणाई रखछि SJCCWW एटा श्री जगन्नाथ चिंतन एंड चेतना वर्ल्ड वाइड एटा आमे एथरे आमे विभिन्न कंट्री रु रहिछु लाइक हमर रमेश बाबू अछंती नाइजेरिया रु रमेश चंद्र बिस्वाल इज द मैनेजिंग ट्रस्टी एंड आउ जने नाइजेरिया रु अछंती संग्राम पटनायक बोले देन मिस्टर भगवान पंडा जे अछंती हमर बॉम्बे मंदिर रवि से जने मैनेजिंग ट्रस्टी प्लस ही इज आल्सो अ मेंबर इन ट्रस्टी आल्सो इन आवर SJCCWW डॉक्टर हरप्रसन्न दास अछंती हमर भुवनेश्वर रु देन सुकांत साहू अछंती हमर यूके रु मु अछि देन बसंत पंडा अछंती हमर अहमदाबाद से भी गोटे अहमदाबाद जगन्नाथ टेम्पल भी से जने ट्रस्टी अछंती हमर जेमती रमेश बाबू कहउतले जे हमर मेन प्रोसेस ये माने सबले प्रयास करि चलछु किपरि जगन्नाथक संस्कृति रो प्रचार एवं प्रसार वर्ल्ड वाइड करा जाय पारि आपण देखिबे हमें जो कोविड टाइम रु हमर प्रति मासरे हमें जहाँ भी हे जाऊ कौन ना कौन जगह टेम्पल जगन्नाथ टेम्पल सहित मिसी करी हमें गोटे बढ़िया प्रवचन आध्यात्मिक कार्यक्रम आरंभ करता एवं समस्त को रुए तो मन थी आमर कामाख्या बाबू थरे हमको किछि लोक कोरापुट मंदिर सहित भी जोड़ी देते मंदिर जगन्नाथ का प्रचार प्रसार करने सहित सहित आमर बहुत गुड़ा अन्य कार्यक्रम भी रही जमी आम गोटे लाइब्रेरी करने को जाऊँ जगन्नाथ गोटे लाइब्रेरी टे करूँ ता सहित सहित आम गोटे पुरी पाखे आम गोटे जगह देखुची जोटी कि जगन्नाथ विलेज बोली कहीकि सब आड़ सब कंट्री लोक मैंने आसिक रही पारे घर किणिकी रही पारे जगन्नाथ विलेज बोली अच्छा ये सब मासिका सहित सहित आमर वर्ष रु आरंभ करछु कौन ना फिजिकल मीट एथर आम करूँ पुरी रे गोटे 3 दिनिया समारोह चलता 3 दिन प्रवचन बोधे ओडिशा रो जे माने सबु सुनामधन्य जो माने प्रवचक जो माने पंडित जगन्नाथ ऊपर अच्छा समस्ते आसते
आमर उद्घाटन करथिले शंकराचार्य पूज्य शंकराचार्य एवं उद्यापन उत्सव रे मध्य आस्तिले गजपति महाराज आपण बिलीव करिवेनी माने जगन्नाथ ऊपर बोधे समस्त भी ताजुब हो जाइतिले जे एते लोक किमिति आस्तिले जो दिन हमको गजपति महाराज आस्तिले कि शंकराचार्य आस्तिले तो हॉल गुडी पूरा फुल रहितला तो या सहित सहित जो आमर अन्य सब जिनस गुड़िक रही भितर भी रही कौ जगन्नाथ मंदिर कौन चली जदि आम कौन टाइप कौन साहाय्य माने आध्यात्मिक हिसाब से कौन साहाय्य करूँ कि जगन्नाथ संस्कृति प्रचार प्रसार में साहाय्य करूँ से सहित भी आम कथबार्ता कर दिस इज आमर रहा ऑल इन माने SJCCWW रो यही सब कार्यक्रम रही मुझे किसी भूली जाइए क्षमा करेंगे रमेश भाईना हुए तो एड कर दे पारे न ये रमेश सब एड कर पारे ना भगवान भाईना भी अच्छा हर भाईना भी अच्छा दे लव लर्न पीपल्स वेरी माने मोर टू बहुत पुरुखा लोक से हुए तो किसी एड कर समस्त को आउ थे समस्त को धन्यवाद जय जगन्नाथ। हेलो हेलो एबे हमर ओडिसी डांस कराइबे अदित दास ओडिसी डांस टा पई संग्राम भाई आपन को मोटे क्लिप टा पठे देथिले से पोस्ट कर दिया इबरे तन पोस्ट कराई छी ना तो होस्ट कराई छी मैडम मैडम कैन यू स्टार्ट इट। जय जगन्नाथ भाई यस आपण अबे कहले लाइब्रेरी रा हो करा हो जगन्नाथ हमर कोठी करा बोली प्लान अछि पुरी रे अच्छा बेंगलोर रे किछि प्लान नहीं बेंगलोर रे तो हमर जगन्नाथ मंदिर गोटे भी हमर लाइब्रेरी ये ऑलमोस्ट काम सब सरी गलानी लाइब्रेरी काम मंदिर भीतर भी गोटे लाइब्रेरी टे होछि मंदिर भीतर तळ पार्श्वटा ना आ गुटे तल पार्श्व होछि बहुत जल्दी जदि मु रंग नहीं कामाख्या हो अपन कहि परिबे बहुत जल्दी यार काम माने फर्निश हेगलानी नहीं जीवो बही पे हम अप्लाई करछु हमें बही मगौछु 15 दिन भीतर हम आरंभ ओके धन्यवाद मु ट्रस्टी मैडम को रिक्वेस्ट करी से आपण को होस्ट अछंती तो प्लीज आपनकर से हेलो 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 मनोज भाई अदित दास को होस्ट अछंती आज्ञा स्टार्ट करो ओडिसी डांस टा हां Is he facing any problem? हाँ नमस्कार मनोज बाबू एक्चुअली टिके नमस्कार, प्रॉब्लम हो नमस्कार। हाँ नमस्कार हाँ, सबाई हो, नमस्कार। नमस्कार सर नमस्कार आपण आपण सेटा होस्ट करि परनंती नहीं आप मैं सही पे आपको होस्ट कर छाड़ दी छु संग्राम भाई आमे कर परिबो सेटा को त लिंक ता तो अछि से तो कोस्ट अछि ना सेरा प्ले कर परिबे से कोस्ट अछि से प्ले कर परिबे तो जदि किछि प्रॉब्लम थाए तांको टिके पर डाकियो भजन भजन टा में कर दी नहीं, परिबे हां भजन जगह पे हमें ओडिसी टा कर दा मनोज भाई भजन वाला परे
सर आपनकर म्यूट अछि। अनाथस्य जगन्नाथो नाथस्य नमोशय दस्य नाथ जगन्नाथो तस्वधुकथं प्रभु नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः नीलाद्रौ शङ्खमद्धीरदलकमली रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं जागृतेन भद्राया वामभागीरथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं सदनपरिभूतं ब्रह्मदारुं भजेऽहं श्रीजगन्नाथं भजेऽहम्। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ पाद पद्म चरणासीत हुई आज प्रोग्राम को आम आगे नेबा। आज प्रोग्राम रे हमर मुख्य वक्ता अछंती स्वामी ब्रह्मनिष्ठानंद सरस्वती, जे माने हमर पुरी आध्यात्मिक समावेश रे जॉइन करथिबे समाने निश्चय स्वामीजी को देखिथिबे, स्वामीजी संगे परिचय भी। आमर 3 दिनिया प्रोग्राम रे प्रातः 3 दिन जाक आम संगे स्वामीजी थिले, मंच उपर भी थिले। तांकर वक्तव्य मध्य से रखिथिले आमर मंच उपर श्री जगन्नाथ परंपरा उपरे। स्वामीजी प्रोफाइल विराट प्रोफाइल यदि पढ़ी बोधे आज घंटाटे पूरा होमर समय पाइबे। विराट प्रोफाइल शॉर्ट रे कहबी एबे जस्ट रिसेंटली यही जुलाई मासरे जून जुलाई सी वर्ल्ड टूर करी आछंती। एई टॉपिक को नहीं तांको आमंत्रण करा जायतिला मेनबर्ग जर्मनी रु एवं कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया टू फ्रैंकफर्ट जर्मनी, देन ऑस्ट्रेलिया वियना, जूरिच स्विट्जरलैंड, ये सब जगह सी टूर करी आछंती। तांकर मेन टॉपिक थिला होलिस्टिक योगा विथ स्पिरिचुअल। भलो टॉपिक थिला, सही टॉपिक आज पर्पसली आमे रखीचु। आपण जानि परिबे एटा गोटे नुआ साधना। आमे तो आमे जानू सन्यासी माने प्रायतः गाड़ी रखिले आमे भावुचु सन्यासी। एक्चुअली सन्यासी एक्चुअली आम संस्था आमे खोजी खोजी आमे आपण मानकर सामने आमे आणु ताकि आपण बुझी परिबे एक्चुअली सन्यासी जाको आमे आम हिस्ट्री रे पढ़ी जनी मंक MONK मंक सेटा आपण माने बुझी परिबे जे सन्यासी कोन। हमर स्वामी ब्रह्मनिष्ठानंद जी जने मंक, श्री होलीनेस श्री स्वामी शिवानंद सरस्वती ऋषिकेयंकर डिसाइपल एवं होलीनेस श्री स्वामी चिदानंद सरस्वती जी की फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ स्वामी चिदानंद वर्ल्ड पीस फाउंडेशन तांकर भी से डिसाइपल। तांकर पिला दिनु तांको समहाउ ए स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत अट्रैक्शन देथिला। एति पय सब छाड़ी से योगदान करथिले ए स्पिरिचुअल दिगरे। से थरे मते देखुथिले जो साधना से करंती हिमालय रे आमे जानिना गोटे जगह रे गोटे छोट मंदिर टी अछि सेटा देखिले आमे हमको मंदिर भली लागिबोनी, गोटे छोट गोटे झोपड़ा पड़ी लागिबो। किन सेटा जगन्नाथ मंदिर गोटे बोर्ड लिखा अछि जगन्नाथ मंदिर बोली।
ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଥର ରଖାଯାଇଛି, ତାକୁ ପୂଜା ହୁଏ, ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ପୂଜା ହୁଏ। ସେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କର ରୂପ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆକାର ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ସ୍ୱାମୀ ଯାଇ ସାଧନା କରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଜଣେ ବକ୍ତା। ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଯେବେ ରଖନ୍ତି ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ରଖନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି କାହାଠୁ କିଛି ଆଶା ନଥାଏ, କିମ୍ବା କିଏ ମତେ କଣ ଦବ, କୋଉଠୁ କଣ ମୁଁ ପାଇବି, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଲୋଭ ନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସିଏ ଫାୟାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ସିଏ କହିପାରନ୍ତି। ସେ ଯିଏ ହଉଛି ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ମନ୍ତବ୍ୟ ସେ ରଖିବାକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି। ୟୋଗା ଉପରେ ସେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ସେ କେବେ ଭୁଲନ୍ତିନି। ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ତ ଜଗତର ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ଯିଏ ଧରିଛି ସିଏ ବା କାହିଁ କାହାକୁ ଭୟ କରିବ। ତ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ସିଏ ରତ ରହନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟତର ହେଇପାରିଛୁ। ଏଇଟା ଆମର SJCCWW ର ଅଭାଗ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇଛୁ। ବେଶୀ ସମୟ ନେଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆମେ ବୋର କରିବୁନି, ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଟପିକ କୁ ଯିବା। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ। ସେଇ ହୋଲିଷ୍ଟିକ ୟୋଗା ଯୋଉ ଟପିକଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ସେଇ ଟପିକରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିବେ। ଆଜିର ଟପିକ ଅଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ମେନ୍ ଟପିକ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମ୍ପରା। ଏଇ ଟପିକଟା ଆମକୁ ଆମର ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଣ୍ଡରରେ ଆମେ ଯେତେ ବି କରୁଛୁ, ସେଇ ଆଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଣୁଛୁ ପ୍ରତି ମାସରେ। ଏଇଟା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ଆମର SJCCWW ବିଷୟରେ ଟିକେ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିଦିଏ। ଯୋଉଟା ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର ପଚାରିଥିଲେ ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀ ବିଷୟରେ, ଏବଂ ମନୋଜ ଭାଇ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଅଥରିଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯଦି କିଛି ଆଉ କହିବାକୁ ଥିବ ଦି ପଦ କହିପାରିବେ ବୋଲି। ମନୋଜ ଭାଇ, ଡୁ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁର ଅଥରିଟି? Yes, Vaina. Yes, Vaina. ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଲାଇକ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ କିଛି ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥିଲୁ ଏ କରୋନା ସମୟରେ। ସେଇ ଟାଇମରେ ଏସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆମର ଯୋଉ ଏମ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଇନ୍ ସର୍ଟ ଆମର ମନୋଜ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିଲେଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପୁରୀ ଭିତରେ ନୁହଁ, କାହିଁକି ପୁରୀ ଭିତରେ ଜାଗା କୋଉଠି ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଝିରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ା। ସେଠି ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିଲେଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା, ଯୋଉଠିକି ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ରହିବ, ଯୋଉଠି ପୂଜାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇପାରିବୁ। ଯେମିତି ଚିନ୍ମୟ ମିଶନ କରେ, ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ପଠାନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇପର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜାବିଧି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର କୋଉଠି ହେଇନି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର। ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପୁରୀରେ ଆମେ କରିବୁନି, କାହିଁକି ପୁରୀ ସହରର ଅନେକ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅନେକ ଗୁଡେ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହଉଛି, ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେଇ ଝିଞ୍ଜଟରେ ଆମେ ଯିବୁନି। ଆମେ ସେଇ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବି ରହିବ, ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ବି ରହିବ, ୟୋଗିକ ସେଣ୍ଟର ବି ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବି ରହିବ ପୂଜା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିଲେଜ, ଯୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଉପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଜିନିଷ, ଯେମିତି ରଥ ନନ୍ଦିଘୋଷର ଚକ ହେଲା, ତାଳଧ୍ୱଜର ଚକ ହେଲା, ସେଇଟା ସେଠିକି ଆସିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ। ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ସାମଗ୍ରୀ, ସେଟାକି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏସବୁ ଗୁଡେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଯୋଜନା ଅଛି। ଯୋଜନା କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ, ଏସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଛଡା ଗଛର ପତ୍ର ବି ହଲେନି। ତ ଆମେ ତ କେବଳ ଛାର ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ା। ଯଦି ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବି ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ତ ଆମେ କହିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷା, ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଏଇ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ, ଓଡିଶାର ନାଁ ରଖିବା ପାଇଁ, ଓଡିଆ ଜାତିର ନାଁ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ SJCCWW ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେବଳ 55 ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍। ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେ କହୁଛୁ 55 ବୋଲି କିଛି ନୁହଁ, 55ରୁ ତାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଣ୍ଟ୍ରି ବି ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଉଚିତ। এটা ଖାଲି SJCCWW ଏଇ ଯୋଉ 8 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟି, ସେମାନଙ୍କର କାମ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାମ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବେ, ମା ଆଜି
ଆମର ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ବହୁତ ଆମର ଉଦ୍योଗପତି ମାନେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି। ବମ୍ବେରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରୀ କଣ ଥିଲା? ନୀଳଗିରି ପାହାଳ ଥିଲା, ଗୋଟେ ନୀଳକନ୍ଦଳ ଥିଲା, ସେଇ ଭିତରୁ ପୁରୀ ବାହାରିଛି। ସେଇଭଳିଆ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଇନ୍ଦ୍ରଧୂମ୍ନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ତ କରିପାରିବା। ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମର ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାସପୀଠ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ହରି ଓମ୍ ସ୍ୱାମୀଜୀ। हरि ओम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। आपको देखा करिया पे शांतनु आस्तिला एठिके। शांतनु प्रधान बेंगलोर। मन्नाथः श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सशंख चक्रं सकिरीटकुण्डलं सपितवस्त्रं सरसीर्भक्षणं सहारभक्ष्यस्त्वकौस्तुभासितं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। नारायणं समारम्भाम् आचार्यत्रयमध्यमाम् अस्मत् आचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरु परम्पराम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत् आचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरु परम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। महाप्रभु श्री जगन्नाथ का चरण रे अनंत कोटि प्रणाम। जगन्नाथंकर भक्त जगन्नाथ चिंतन चेतना वर्ल्ड वाइड संस्थार जो भक्त माने जो अनुष्ठान कर्मकर्ता माने प्रयास रे सत्संग जारी करिसेंती सेमानकु मध्य मोर घनिष्ठ प्रणाम। केतेक लोक बाहर अछंती मु ऑनलाइन रे सेशन ये से माने उड़िया बुझी पारिबे नै। जदि आपण अनुभूति देबे मु ताको इंग्लिश उड़िया मिसै करी कहले चलिबो की? चलिबो चलिबो करंदो। आज्ञा आज्ञा। जय श्री जगन्नाथ। श्योर आज्ञा। So today the auspicious Ekadashi day, and it is called Hari Shayana Ekadashi. The Lord, as per the Hindu tradition, Hari Narayana Hari Shayana Ekadashi. And from today, the Chaturmasya Vrata begins. Chaturmasya Vrata, especially prescribed for the monks, those who travel all the time throughout the year, but they will not move out from the location or the place they would stick to, and that auspicious day begins from today. And Sri Jagannatha Temple today in Puri is too much of rush, over rush. Morning time, those who went to for Mangala Arati, they came by 9:30, something like that. So आज एक अत्यंत पवित्र दिवस हरिशयन एकादशी एवं पवित्र दिवस चतुर्मास्य व्रत आरंभ होउची। जो चतुर्मास्य व्रत रे सन्यासी परिव्राजक जो माने जीवन यापन करंती साधना करंती से माने गोटे जगह रे स्थिर भाव रे रही करी साधना करंती एवं से साधना केवल तीनोटी जिनिस को नै करी होय। ता ना होची प्रस्थान त्रयी। भगवत गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र विधिबद्ध भाव रे गुरु को चरण रे बसी पठन एवं पाठन। From this auspicious day of Chaturmasya Vrata, the study of Prasthanastrayi begins. Of course, throughout the year you can do study of Prasthanastrayi,
but especially from this day onwards, the combined of three Bhagavad Gita, Upanishads and Brahma Sutra systematic way रे पढ़ा जाए। ये पवित्र दिवस रे भगवत कृपारू जगन्नाथंकर अपार करुणारू चल चंचल समय सब बाहर करी मोबाइल को बाहर रखी जो माने एठी धैर्यर सहित बसिचंती बा सत्संग रे भाग नउचंती सेमानंकु मोर हार्दिक अभिनंदन एवं मु अनुरोध करिवि जेतिक समय बसिबे मु समय दउची बा अन्य माने भी समय दउचंती टिके एक्टिव बसंतु मु सबले प्राय सब जाक स्क्रीन के ऑन है। So my face is reflected on each and every skin of yours, those who are video is on. So upon one movement habo, more important movement habo, and then I will point out the person's name. Anyhow, thank you. जगन्नाथंकर परंपरा रे ये जो प्रचेष्टा चली छी ये जो भावरे आध्यात्मिक चेतनार जागरण पे महाप्रभु का प्रेरणा रे गजपति परम पूज्य गजपति महाराजन को माध्यम रे ये जो जगन्नाथों को ट्रेडिशन हिसाब रे जो सत्संग आयोजन प्रति ये रे करा जाउची एवं विभिन्न प्रकार देश रे विभिन्न प्रकार जोटी जोटी जगन्नाथ महाप्रभुंकर मंदिर इत्यादि अच्छी सही स्थान मानकरे सत्संग जो करा होउची ये जगन्नाथ चेतना जगन्नाथंकर संस्कृति विश्व मानवता को भातृत्व रे बांधिबा धर्म निरपेक्ष भाव रे समस्ते आध्यात्मिकता को जीवन रे जापन रे आनिबा निज जीवन रे प्रति मुहूर्त रे आचरण रे लगेइबा एवं ये विश्व रे संपूर्ण भाव रे शांति प्रतिष्ठा जगन्नाथंकर ट्रेडिशन बहुत ट्रेडिशन महापुरुष माने मनीषी माने कहंती जे इफ टुडे यू आर born and you start going to Jagannath temple from today onwards, then by the time you die, if you live at least for a year of 100 or 110 or 20, the deity is present inside the temple premises. The temples inside the temple of the main temple, one cannot visit. There are innumerable number of deities, individual deities. So many things are inside the temple that one lifetime is not enough. However, जगन्नाथंकर 12 मासरे जेपरि 13 पर्वरु तांकर जदि ट्रेडिशनल परंपरा आपण अनेक अछि आपण माने अनेक स्पीकर भी कहिसंती देयर आर सो मेनी थिंग्स आल्सो देयर एंड जो माने विधिबद्ध भाव रे श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर महात्म्य बा जगन्नाथ महाप्रभु जे कोन तांकर पूजा विधि कोन तांकर ट्रेडिशन कोन केमिति भाव रे महाप्रभु कोन चाहंती केमिति तांकर पूजा करा जीवो केमिति तांकर अर्चना करा जीवो ये सब कथा इन ए सिस्टमेटिक वे विधिबद्ध भाव रे एबे शरीर रे थिबा कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास अष्टादश पुराण रु स्कंद पुराण रो अंतर्गत पुरुषोत्तम महात्म्य बा श्रीक्षेत्र महात्म्य रे विशद भाव रे वर्णना करिसंती जेउ माने यही पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य को ओडिया रे हो बा हिंदी रे हो बा इंग्लिश रे हो पढिसंती दया करी हाथ उठांतु बा किपर स्क्रीन रे गोटे हाथ उठेबा सिंबल दियंतु बा जदि आप वीडियो हाथ दियंतु जो माने विधिबद्ध भाव रे बा एमति सिंपल भाव रे जगन्नाथंक ऊपरे कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यासंकर प्रणीत स्कंद पुराण रो अंतर्गत श्री जगन्नाथंकर पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य को कोनोसी बा लैंग्वेज रे पढिसंती केमिति बा पढिसंती टिके हाथ उठै दियंतु हां किछि ये करिवार नाही जो माने न पढिसंती एवं विशेष भाव रे कर्मकर्ता भाव रे अछंती मेंबर अछंती ट्रस्टी अछंती बोर्ड रे अछंती ह्यूज डोनेशन दउछंती बा जो जगन्नाथ मंदिर रो जो एक्टिविटी अछि प्रबल भाव रे इन्वॉल्व अछंती सेमाने को मोर विनीत जोड़ हस्त रे विनम्र अनुरोध ताको टिके पढी नियंतु जदि संस्कृत रे न पढी पारुचंती तार सिंपल ट्रांसलेशन बही मध्ये अछि
if you are not able to read the Sanskrit verses originally, then there are books which publications, it is available in Jagannath Temple. You can order online also. Simple translation of the Purushottam Mahaprabhu in Hindi, in English, in Oriya also. ये जेपर्यंत जो माने ऑर्गेनाइजेशन भाव रे काम करूछंती संगठन रो शक्ति की नहीं के जो माने काम करूछंती एवं जगन्नाथंकर गोटे बड़ भक्त भाव रे निजको भाबी नउछंती सी टिके पुरुषोत्तम महात्म्य पढ़िले गोटे क्रॉस चेक पड़िबो. इट इज ए barometer to give you an indication whether you are truly a devotee of Lord Sri Jagannath or falsely you imagine to be a devotee of Lord Jagannath, or you feel yourself that I am a rich man and I am a huge donation I am going. That is why all the such rules and regulations are not applicable to me. ये जो आपणकर भक्ति बा भक्त हवा बा ठाकुरंकर सेवक हवा बा ठाकुरंकर मंदिर उपरे कर्म रे लागिबा यार परिष्कार भाव रे जो भित्तिमूल नियम गुण क्यारेक्टर पूजा विधि देश विदेश केमिति स्थिति व्यक्तिगत जीवन जगन्नाथଙ୍କ संस्कृति सहित आउ कोठी पाइबे नाही एवं जदि कोठु पाउछंती भी on from some unidentified source, please cross check with the original Purushottama Kshetra Mahatmya written by none other than the immortal being who is still living, Krishna Dvaipayana Bhagavan Veda Vyasa. एवं आमर खुशीर कथा आमर दिव्य जीवन संघ Divine Life Society International Headquarters, who is the Vice President, Pujya Swami Nirlitananda Saraswati, once upon a time who was an IS officer. He is right now Swami Nirlitananda Saraswati, Vice President of the Divine Life Society Headquarters Rishikesh. सी आकु विधिवत भाव रे इंग्रजी रे अनुवाद करिछन. तेणु आपण आइदर यू फॉलो इंग्लिश और हिंदी और ओरिया, somehow try to read it, and especially मु से मान अनुरोध करछि जो माने एक्टिविटी रे इन्वॉल्व रहउछंती बा भक्त भाव रे निजु कहि होछंती थरे पढी गला परे आपण जानिबे जे कोठी आपण अछन. हौ एबे आमे ट्रेडिशन को आसीबा. मोर जहा मु जेतेबे कहे always the theory I put into a practical format, and practical format I take down from the scriptures. जगन्नाथଙ୍କ मंदिर रो अनेक नीति रहिछि. प्रारंभिक नीति जति नीति आरंभ हेबो से नीति होउछि मंगल आरती. मंगल आरती जेहेतु एडमिनिस्ट्रेशन रहउछि टेम्पल sometimes because of the too much of rush 6टा 6:30 समय रे खोला होउछि, किंतु मंगल आरती रो जो समय ब्राह्म मुहूर्त अनेक समय रे आमे जेतले पिला बेले आस्तलु सकाळ समय रे 5टा 5:30 सुधा मंगल एबेली मध्ये हेइ जाउछि. ये मंगल आरती जो समय जदि भी मंगल आरती जो समय होउछि आपण ऑनलाइन रे सबले जानि परिबे. मंगल आरती रो समय रु ठाकुरंकर जो अनेक परंपरा रहिला अनेक ट्रेडिशन रहिला तार शुरुआत होउछि सकाळ रो मंगल आरती. आपण माने विदेश रे थांतु देश रे थांतु श्रीक्षेत्र पुरी धाम रे थांतु सेवक हुंतु बयस अधिका हो बा ट्रैवल करि थांतु इंटरनेशनल हो बा लोकली हो बा डोमेस्टिक हो जो कोनसी अवस्था रे जेउ स्थान रे अछंती मंगल आरती जो समय रे महाप्रभुंकर होउछि से समय रे आपण टिके जागृत रहिबे. निद्रित न रहिबा भल. निद्रित से लोक रहिबा जाको डॉक्टर कहिछि सोया पे मेडिकेशन अछि सर्जरी हेछि ऑपरेशन हेछि नहले आउ कोनोसी रीजन नुहे. देयर शुड नॉट बी एनी सच रीजन which will allow you to sleep in the Brahma Muhurta, which here Lord Jagannath Prabhu's Mangala Arati is going on. So, ये जदि गोटिए नियम ट्रेडिशन रो हजार नियम अछि पुरुषोत्तम महात्म्य रो अनेक नियम अछि. महाप्रभु कहउचंती राजा मोर पूजा एई बळी भाव रे करिवो एई बळी भाव रे कले मु खुशी हेबी. तार ये प्रथम झलक ठाकुरंकर नीति आरंभ होछि मंगल आरती. जो माने पुरी आछुचंती मंगल आरती अटेंड करचंती पुरी जो माने नाहंती बा भारत रो अन्य प्रांत रे कोनोसी स्टेट रे अछंती बा विदेश रे मध्ये अछंती whether you are in foreign or in India, continue the time period when it is of the Mangala Arati time of Bhagavan Sri Jagannath Mahaprabhu in Puri. हम आपण जदि अलगा देश रे अछंती सेही देशर समय अनुसार आपनकर मंगल आरती लंडन रो समय एती समय सेही मोमेंट रे कोनोसी कारणरू किछि एक्सक्यूज न करी करी जागृत रहिबे. जदि स्वास्थ्य भलो अछि
तुरंत स्नान करिनेबे तेबे जगन्नाथଙ୍କ परंपरारे डायरेक्ट जोड़ी हबार जो प्रैक्टिकल मेथड नंबर 1 रूल प्रथम नियम जदि भक्त भाव में आमे कहि होउचे ताहले मु महाप्रभुंकर मंगल आरती अटेंड करिवि मोर बयस वर्तमान 80 मु किंतु उठी पारु नाही स्नान करि पारिबि नाही से व्यक्तिंकर एक्सेप्शनल केस किंतु जदि देह भल अछि ताहले स्नान नकले मध्य पवित्र भाव में गंगा जल पकी गंगा गंगा को स्मरण करी मंगल आरती समय रे जगन्नाथ को ध्यान करिबा प्रत्येक भक्त प्रत्येक कर्मी प्रत्येक संगठक ये शुरुआत ट्रेडिशन रो शुरुआत आपण अनेक काम करि पारंती ये गोटिए काम जदि आपण करिवे परीक्षा करी देखन गोटिए दिन संकल्प नियंतु जे आसंता काली मु मंगल आरती रे महाप्रभु को मंगल आरती मोई घर मो रूम रु कर्पूर जाली करी करी total there will be a paradigm shift of your entire life throughout the day you can test it for yourself tomorrow गोटिए नियम को जतरा पालन आपण करि देबे ऑटोमेटिक आउ कते गुडा का नियम ऑटोमेटिक पालन हेई जीवो उदाहरण स्वरूप विष्णु सहस्रनाम पाठ गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपम वजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम भगवान आदि शंकराचार्य भगवत पादाचार्य जे की भारत वर्ष रे हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति रक्षा करिया पई चारि धाम को पुनः प्रतिष्ठा कले बद्रीनाथ रे बद्रीनारायण द्वारका रे द्वारकाधीश रामेश्वर रे रामेश्वर रामनाथ एवं जगन्नाथ रे श्री जगन्नाथ महाप्रभु को से जेतेबेले तांको पचरा जाउछि जे हमें आध्यात्मिक जीवन पे प्रैक्टिकल हमें कोन करिगा ना गेयम गीता नाम सहस्रम प्रतिदिन भगवत गीता एवं विष्णुकर नाम सहस्र जहार गोपाल नाम रे सहस्र रे इच्छा अछि से कर परिबो आ ए भले हरे गेयम गीता नामस्रम ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम लक्ष्मीकर पति श्री नारायण महाप्रभु श्रीमन नारायण बा जगन्नाथ महाप्रभुकर दारु ब्रह्म रूप को ध्यान करिवो एवं आ कोन करिवो ना नेयं सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम मो पाखरे 10 टंका अछि मु 10 पैसा दान करि पारिबि मो पाखरे 1000 टंका अछि मु 100 टंका दान करि पारिबि मो ठारू जो माने गरीब दोज हु आर लेस प्रिविलेज्ड लिटिल पुअर सेमान को व्हाटएवर कंफर्टेबिलिटी गॉड हैज गिवन मी आई विल शेयर दैट विथ द लो और द अंडर प्रिविलेज्ड वन नेयम सज्जन संगे चित्तम whatever you are thinking whatever thoughts are coming to your mind please understand 99% of the thoughts are not of yours आपनको मन रे जो thought process आसुची 90% of thoughts are not yours these are all simply picked up from the atmosphere आपण जहा साहित्य वर्तमान आपण एडी स्क्रीन सामने रे अछंती you are picking up the thoughts of the divine thoughts because the satsang is going on we are glorifying and having the remembrance of Lord Jagannath Mahaprabhu immediately आपण गार्डन को चली जानतो आपण thought process change हे किचन की चली जानतो thought process change हे so thought processes whatever is appearing to the individual mind 90% of the thoughts are not of your own you are simply picking up from the atmosphere until unless your mind is very very strong you won't be able to neutralize all such thoughts though not visible to the naked eye but they are all this world is full of thoughts only. So because more of the power of the demonic thoughts are prevailing due to the effects of the Kali Yuga if you do not give time yourself for satsang, then you will be drowned with the force of the demonic tendencies. दैव एवं आसुरर ये जो संग्राम ये जो आध्यात्मिक चेतनार जागरण महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु तांकर अवतार रे श्रीमद् भगवत गीता जो कहउछन्ति मोर अंश तुम मानक भितर रहिछि ममे वांशो जीव लोके जीवभूतः सनातनः my part is there in each and one of you, every one of you. So Bhagavan is omnipresent, omnipotent, omniscient. He is infinity.
So logically, each and every fraction of infinity is infinity. Sei Chetana jo Shakti समस्त भीतर रही सी ता भीतर जो पोटेंशियल रही पोटेंशियल इज ह्यूज एवं से पोटेंशियल को एक्सप्लोर करिया पे जो प्रैक्टिस जो मेथड ताको भगवान विधिवत रूप रे 18 अध्याय रे श्रीमद् भगवत गीता रे सिस्टमैटिक वे रे कहिसथि ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन my part is there in you all. Because of the demonic tendencies, because of the negative forces, भगवान करे जो माया शक्ति रही जेतले भगवान बर्तमान कृष्णकर जन्मदिन आसीबो भगवान कृष्ण जन्म हेबे साथे साथे जोगमाया भी जन्म नेबे आमे माने समस्त कृष्णकर जन्मदिन पालन करू जोगमाया के जन्मदिन प्राय बहुत कम लोग पालन करंती ये भगवान कृष्ण जन्म नउछन्ती सांगे सांगे जोगमाया मध्ये जन्म नउछन्ती whenever God takes incarnations he brings जोगमाया with him जोगमाया सांगे सांगे ऑपरेट करिवे आ जो मायांकर दुईटा रूप विद्या माया अविद्या माया विद्या माया आपन को धीरे 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 रिलीज करिवो फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ अविद्या माया विल स्लोली पुल यू डाउन 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 एंड टेक यू टू लोअर बर्थ सो भगवान कर जो शक्ति ये सृष्टि जो चली ये केवल शक्ति रे चली दृष्टि शक्ति श्रवण शक्ति वाक शक्ति मंत्र शक्ति औषधीय शक्ति जीवन शक्ति any word you use shakti word is already inherent there you cannot use any word without putting shakti there sarvam shaktimayam jagat the whole world both whatever sin and unseen is purnam with shakti only and that is the power of Bhagavan that we call the illusive, delusive, and Maya Shakti. So this Maya Shakti has been divided into two. One is called Vidya Maya, another is called Avidya Maya. Vidya Maya to be truthful, Satya, Ahimsa, Pavitrata, Karuna, Kshema, to be loving to others, think of others first, without keeping any selfish motive, niswartha parata. These are the criteria, these are the basic virtues of Vidya Maya, but it is also Maya. But however, this will free you from the cycles of birth and death slowly, 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 and it will translate you towards go to the Gunatita Avastha, as Bhagavan says in Bhagavad Gita, Trigunang Vishayar Vedo Nistray Gunya Bhavarjuna. The three gunas, Sattva, Raja, and Tamas, known to be Visaya, and go beyond the three gunas. Bhagavan, Param Brahma, Paramatma, Daru Brahma, he is Nirguna and Saguna. Nirguna Brahma, Saguna Brahma. So, and Avidya Maya, anger, greed, lust, egoism, destructive attitude, jealousy, hypocrisy, all these tendencies with selfish motive. There is a very thin line which will demarcate you the spiritual virtues or divine virtues and demonic virtues. Any virtues, any work you are performing, any thought you are projecting, any of the things you are speaking, if it is mixed with egoism, if it is mixed with I-ness and my-ness, you are known to be a demonic nature. And if it's a projection, the action, the thoughts, the words are for the benefit of others with a selflessness, without having any selfish motive, then these are divine. Daiva sampad vimokkhaya nibandhaya shurimate. O Arjuna, know it for certain that the demonic tendencies will bind you and the divine tendencies will give you, release you from the cycle of birth and death. For this, Bhagavan has put a separate chapter. It is called Daiva Sura Sampad Vibhaga Yoga, and this is the ringing note of Bhagavad Gita. Not only Gita, all Puranas, whether you go to Mahabharata, Ramayana, or any Puranas you go, although it is the message, central message to unfold this latent divinity in each and every human. The potential can be exploited
overruling and transferring these demonic tendencies towards complete divine. And for this reason alone, God has given us this human birth. Human birth has got no other purpose. Due to prarabdha karma, due to the karmas we have done in the past life, we got such a husband, such a house, such wife, such children, so much teacher, etc., etc., etc. But the human birth has got only one purpose: to realize God, to realize Bhagavan. Control microphone off so disturbance Usha Misra, Narendra ji, please switch microphone off kariye. Thank you. So I am holding a pan now, and it is red hot iron, and I put 1 drop of water there. In a few seconds, on this red hot iron pan, the water drop will fall. In a few seconds, it will make a noise, then it will evaporate. So also is our presence upon this planet Earth. You are planning so many things. We planned actually that I will do so many things in 2022, but in Corona took away many. Those who had plans, I will do so many things in 2023. The last year they also left. Those who planned that today satsang we will attend, day before yesterday they passed out. There is no guarantee that you will live for 100 years. And even if you live for 100 years with a good health or something, one day you have to live. So this life, what we take it up as so jovially, so naturally, we think that we are permanent here. We will not go anywhere. Whether you are successful or not, whether you are unsuccessful, whether your health is good or not, whether you erected 1,008 numbers of Jagannath temples all over the world or not, whether you donated 100 crore or 10 rupees to Jagannath Mundi or not, one thing is certain. Every day, every moment, the sun is rising and sun is setting, and one day is minus from your life. Work as much as hard you can. Put all your money, manpower, all the relatives and the properties together. When the Lord of Death arrives, your so-called important engagements will be instantly cancelled. You cannot say that, oh Jagannath, just allow me for another 6 months to live because I have a daughter to get married. Allow me another 1 year to live because I want to send my son to foreign for abroad higher studies. When death will arrive, all your important engagements, all your so-called important notes and visions and missions will be instantly cancelled, and you cannot raise a question, you cannot do anything. In the twinkling of an eye, you will vanish on this planet. So this example you remember always. In a hot iron, hot pan, red hot pan, a drop of water falls, makes a noise for few seconds and vaporizes. So is my presence on this earth. Oh Lord Jagannath Mahaprabhu, you have been very kind and gracious. I have not a heart attack till now. I don't have a blood cancer. My hair, legs and hands are working properly. Nobody takes me to my toilet. I operate on my own. I am thankful and grateful to you, O Lord Jagannath Mahaprabhu. You have given me the opportunity to serve you as a president, as a secretary, as a treasurer, as a trustee, as a person on whom so many devotees depend or trust. Make me worthy of your seva. You, on your own, you cannot qualify as a sevaka for Thakur's seva. You cannot, unless God allows you to do so. So with a humble mind, waking up during the time of a Mangala Arati, I am putting emphasis on this particular point. When you talk of the tradition of Jagannath Mahaprabhu, there are thousands and hundreds, but it begins from Mangala Arati. So wherever you are, even if you are traveling, stick to this one tradition, one ritual I will do as a love for my God, Sri Jagannath Mahaprabhu.
During the Mangala Arati time, I will be awake. I will be completely awake. I will remember my Prabhu. Man mana bhava mad bhakto majjaji mang namaskuru. Mame vaishyasi satyam te pratijane priyoshime. Remember me. Repeat my name. Think of me. Meditate on me. Take refuge at my feet only. I will protect you. I will save you. And these are promises Bhagavan in Bhagavad Gita, and that is why Jagannath Mahaprabhu all the time stretching hands, ready to embrace. And only thing we have to throw this cloth away. Cloth means वो जो गाना अनुप जोल्टा का बोलता है, ये मैल चादर उड़ के कैसे प्रभु तेरे द्वार में आओ. How can I enter to your door wearing this dirty cloth and woven with anger, lust, greed, jealousy, hypocrisy? Mail chadar ud ke kaise? How can I enter to your sanctum and sanctum of the temple wearing such a dirty cloth? So Jagannath Mahaprabhu's tradition, to keep up the traditional principles as mentioned in the Shri Mahatmya, written by Krishna Dvaipayana Bhagavan Veda Vyasa, who is still living. Ashwatthama, Bali, Vyasa, Krupascha, Hanumanascha, Parashurama, etc., all 7 immortal beings, and Krishna Dvaipayana Bhagavan Veda Vyasa has still retained his physical body and is known as one among the 7 immortal beings. Just like people are coming, they have left the body, Buddha has gone, Jesus has gone, all saints, sages, they have come and gone. But Krishna Dvaipayana Bhagavan Veda Vyasa, whose birthday we celebrated as Guru Purnima. Recently, Guru Purnima has gone. So all over the world, generally because of the lot of traditional ways, the Guru system, we are, of course, we are worshipping our Guru, but the Guru Purnima is dedicated to Krishna Dvaipayana Bhagavan Veda Vyasa. And his writings in the Skanda Purana, under the chapter called Purushattva Kshetra Mahatma, gives us a guideline of the greatness of Lord Jagannath Mahaprabhu, the principles how to worship, what are the rules to be followed, how the things to be organized. Not a single thing has been left. Everything is there. So I request you all to go through this, and at the same time, I will be focusing on some practical aspects of few mantras. Please do remember these mantras the moment you wake up from bed. Very, very powerful mantras. Try to remember the moment you wake up from the bed, or at least when you go to the bed. Number 1, death is certain. Here you are doing anything, everything, whatever thing you are doing, only one thing every day, your day life is getting certain, and you are proceeding towards the goal called Mrityu. So the enlightened masters, the illumined masters, the masters, those who have attained the highest state of realization, they say either you remember God or death. Either of the two will take you to the path of self-relation. So mantra number 1, remember death. Always remember death. I don't know what will happen tomorrow morning. Oh God, I am grateful and thankful to you. The whole day I am live, and sun has set now, and I'm still live. So when you wake up in the next day morning, say thanks to God. Okay, whole night I am alive, and I'm grateful and thankful to you. So number 1 mantra, remember death. Number 2, mode of death, time of death is uncertain. Death is certain, but time of death, what time it will come, what mode it will come, whether in flight or in the called ship, or in train or bus, or in the temple itself, in the premises of Jagannath Mahaprabhu, or sitting in your puja room, or in the corona bed, or in the toilet. Death is number 1, death is certain. Number 2, mode of death, time of death is uncertain. And these are the things, it will not look upon your position, whether you are a minister, whether you are a president, or whether you are a called monk or Pithadishwar, whether you are a president, secretary, treasurer, or trustee. These are the things death will not look into
there will be no escape from it. And mantra number 3, the life what we have been going through on this planet Earth is full of sorrows and suffering. Number 3, go back to the 20 years back. You had some visions, I will do these things. Now God has given you that things. Go back to 30 years back. Now you had such visions and missions in life. God has now given you. That time, 30 years back, you are not happy. 20 years back also, whatever vision, you are not happy. 10 years back also, you got everything, not happy. Now God has given you everything, still not happy. So when will you be happy? So mantra number 3, even you break your head here in this world, putting your mind and energy all together for these worldly achievements, it will not give you happiness. So mantra number 1, death is certain. Mantra number 2, time and mode of death is uncertain. Mantra number 3, there is no happiness in this world. Sarvam dukkhamayam, sarvam dukkhina vivekina, sarvam dukkham vivekina. To a man of discrimination, everything is full of sorrows and suffering. There is no happiness here. You break your head, you put your energy together. You were married, that time also not happy. You got married, also after that not happy. You had no children, you are not happy. You had children now, you're still not happy. You want to give education children, so you are not happy. Now you give education to your children, also not happy. Children wants to be married, you are also worried. Now children got married, then also worried. Where is the time to be happy? So if the mind, energy, effort, what God has given you, when it is put in the direction of the world, there is no happiness here. And a discriminative mind, a mind with little calmness, with little analysis, will understand there is no happiness here. If I want to seek happiness, I will seek happiness at the feet of Lord Shree Jagannatha. So number 1, death is certain. Number 2, time and mode of death is uncertain. Number 3, as much as effort you may try, put forward, you will not get happiness in this external world of name and fame or called form. And number 4, God is the only way. God is the only way. God is the only way. No other way. Number 4, only Lord is the only way, no other way. Then how to go and how to attain that? Then satsangatve, nissangatvam, nissangatve, nirmohatvam, nirmohatve, nischalatatvam, nischalatatve, jivan mukti. Take refuge for satsang. Be in the company of the saints, those who have already attained God. Be in the if you don't get the company of saints, take the company of holy books. You may not find a good qualified saint as you would expect. So better take refuge at the great messages of Bhagavan, like Ramcharitamanas, like Bhagavad Gita, Yoga Vasishtha Ramayana, etc. So spend time with Shraddha. If you are not getting satsang, spend time with Shraddha. So number 1, death is certain. Number 2, time and mode of death is uncertain. Number 3, there is no happiness in the world. Happiness only can be found in the Lord. And lastly and not leastly, 4th one is there is no other way. God is the only way. And how to attain God? The scriptures give us the directions. Illumined masters give us the directions. The enlightened one gives us the directions. That is the path directed by the realized one. If you don't find the realized one, accept Bhagavan Krishna as your guru and follow the teachings of Bhagavad Gita. And not only that, anything you know from your childhood, start putting those into practice. Very simple thumb rule. Mangala Arati is Bhagavan's time. It is the time of God.
It is called Brahma Muhurta in Hindu or Sanatana Dharma. This is also called the early morning prayer in Christianity, or you go to any other religion of the world. No religion has allowed you to sleep during sunrise. No religion has got, no, okay, you sleep at up to 9 or 10 o'clock. And it should begin with the person who is asking the children to wake up early, but the person himself or herself sleeping. It should begin from the guardian's level. So they say there are 3 baths. One is called Dubdha Snana, Khira Snana, Nira Snana, Rudhira Snana. This is a spiritual dimension, but has been put in a very normal way, that if you are taking shower before sunrise, then this is equivalent to take shower in milk. This is called Khira Snana. If you are taking shower, just sun is rising up in the horizon, it is called Nira Snana. You are taking shower in water. But if a sun has already arisen in the horizon and you are taking late shower, it is called Rudhira Snana. Shower in blood. This is a criteria given by the saints to wake up early. And Mahaprabhu's first ritual or the Mangala Arati starts. The singing happens in the temple premises. Those who are regular in attending it, they will understand. And the vibrations of the early morning hours before sunrise changes during sunrise, changes again after sunrise, changes during the midday, changes in the evening, changes in the night and the concluding day. However, these timings from the morning hours till the night when Thakur goes to not a single moment or hour is called as Brahma Muhurt. But these early morning hours from sunrise time, at least before 1 or 2 hours, the period is known as Brahma Muhurt. And Amara Kahanti je Nirmalya Kholare ba Ananda Bajarare जो निर्मल्य कणिका बा महाप्रसाद कणिका सब पड़ी जाई थाए ब्राह्म मुहूर्त रे देवता माने आसी ताकू कुंटिकरी नहीं पड़ांती अनेक जिनिस स्वर्ग रे न थाए देवता माने ये ब्राह्म मुहूर्त रे आसीकरी ताकू सब नियंती कोनोसी समय रे कोनोसी आध्यात्मिक व्यक्ति निजको भक्त भाव रे कहउतिया व्यक्ति ब्राह्म मुहूर्त रे सुए नाही प्रोवाइडेड ताकर हेल्थ कंडीशन बा देहर सेमति किछ नथिबो एई महाप्रभु मते एतिकी शक्ति आज दियंतु आजिर सत्संग रे मते प्रभु एतिकी शक्ति दियंतु जे काली ठारे मु ब्राह्म मुहूर्त रे आपनकर जो मंगल आरती होउची से मंगल आरती की मु केमति अटेंड करे so these are the practical aspects of Jagannath Dharma, or we call Bhagavata Dharma. And you refer to any religions of the world, any spiritual masters of any tradition, they will stick to all these principles. And we have been talking all this nationally, internationally, everywhere. And the essence is spiritual, ethical, and moral regeneration of humanity. I am going to the temple. I offer flowers to God. I go to temple 3 times. I eat Mahaprasad every day without fail. But I am full of greediness, full of selfishness. I always speak at the back of others. I am a person with backbiting tendency. I speak ill of others. Then of course I am doing a ritualistic activity to be a devotee of Jagannath Mahaprabhu, going morning and evening, eating Mahaprasad every day. But I am not able to be a true devotee of Jagannath as such demonic tendencies are still with me. Very, very important thing I am telling you, have to think, rethink, meditate, scrutinize, and plan yourself before you die, before death takes away. Understand this purpose of life. There is no other purpose, whether you will stay in London, America, Puri, Jagannath, Badrinath, or any part of the world, or you bake somewhere in the island or go to moon.
these demonic tendencies are there within each and every individual. And the purpose of this human birth is only to know yourself. Even if you don't believe God, live it. You try to know yourself. 100 years back, where were you? After 150 years, where you will be? In between the time frame, what are you going to do? And what are you doing to the? And with so much of ego, so much of arrogance, so much of fighting. And remember this example, the hot iron rod, and you are putting just one drop of water, in the twinkling, in the blink of an eye, it's evaporated with a shh noise. So is our presence on this planet. So, sincere prayer to Lord Jagannath. Oh Lord, give me the strength, give me the courage, though I may not obey all your rules and regulations. Allow me to obey this simple rule, this one rule, the first rule, that let me wake up at least during your Mangala Arati time. Let me be at least truthful not to my father, truthful not to my guru, truthful not to Jagannath, truthful not to my teacher, truthful not to my old father or mother. Let me be truthful to myself. What I am thinking, that I should speak, and thus I should put in action. This is Jagannath Dharma, and it begins with the Srimad Bhagavatam also begins with this. Satyam Param Dhimai, the original Bhagavatam. If you look into the Sanskrit verses written by same Krishna Depayana, Bhagavan Veda Vyasa, it begins with Satyam Param Dhimai. Let us meditate upon their supreme truth. Let us meditate upon that supreme truth. Not only that, Srimad Bhagavatam begins with this, and in the end chapter, concluding chapter, all last skanda, in the chapter again it is repeated, Satyam Param Dhimai. Let us meditate upon the supreme truth. Now the question is, what is the supreme truth? The supreme truth is sitting on the Ratna Singhasan in the Sriketra Sankhaketra of Jagannath Puri Dham. The supreme truth, or the supreme Brahman, or the Para Brahman, or the absolute, whatever you say, it is there on the Ratna Singhasan. One can have the darshan of the Lord in the Charma Chakyu. Now the question is, that means, is he confined to only Ratna Singhasan? Yes, he is confined to Ratna Singhasan. At the same time, he is confined everywhere, in all parts of the world. Not a single speck of space is left. Not a, our eyes even cannot go, our mind even cannot go. Namo Namo Prabhu Bhakya Munatita Manovachane Kadhar. This is a composition of Arati by Swami Vivekananda through his guru. But here he describes about the Brahman. The mind cannot go there. So, oh Lord, the Parabrahma who is there on the Ratna Singhasan, yes, of course he is there. But at the same time, he is everywhere. He is there in you listening now. He is through me speaking now. He is there making noise now. He is the king. He is the Praja, Raja. He is the Shatru. He is the Mitra. He is the poison. He is the Amrita. Everything, there is nothing which Jagannath is not. So this is the transcendental aspect of Lord Sri Jagannath. So, Satyam Param Dhimahi, let us meditate upon that supreme truth. That supreme truth, you called it Dharu Brahma, Para Brahma, you all in the Vedanta, you call whatever name you give, or you give a new name as you like to your own individuality. Meditate on that, and that Bhagavan, he who is sitting on the Ratna Singhasan, is also sitting in the Hridaya Singhasan. Only thing, it has to be cleaned up. Maile chadar uduke kese tere dwar aun. So, with his grace, we are here, and स्वामीजी मोस्ट पर आसु नहीं फ्री जाइगले Maybe
नेटवर्क इश्यू रही तो गोटे सेकंड तक मो पत्र दे एनीवे एंड एंड करिवा समय है गलानी हाँ एग्जैक्टली या पर हमें आरंभ करिया ओडिसी तंकर अछि तापर नहीं स्वामी जी को सर जाओ भगवान है कथा है जनता स्वामी हाँ जी तापर आपनकर हमें लाइन कटि गला प्रशांत अछि भजन पई भजन तंकर जोड़ा है लाइन कटि गला अच्छा कौन करे भाई ना स्वामी जी आउतर जॉइन करूँ तुझे ना ना कोच कोच तंकु तो राउंड अप करे आसिरनी स्वामी जी एथर समय ही आसलानी आम एथर रखिबा आपनकर नेटवर्क बोधे इश्यू टी अच्छे सेपटे आमे एठी रखिबा हमको अन्य प्रोग्राम नेबा आगु को स्वामी जी हेलो आमे प्रोग्राम आगु को नेबा स्वामी जी रखिबा एठी एथर एबे सुनी पारुछंती कि सर हां सुनी पाउ जी आमे टिके आगु को नेबो आगे आगे ठीक है आगे वेट कंक्लूड कर दो आगे आगे ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 ओम श्री जगन्नाथाय नमः ओम श्री जगन्नाथाय नमः ओम श्री जगन्नाथाय थैंक यू मोर टाइम रो बहुत तो टिके अधिका नहीं गली आउ जय जय ना ना इट वाज मोर एजुकेटिव बहुत बढ़िया स्वामी जी आज रो बहुत सिखिलु टाइम केमिति पळेला हम जानि पालुनी so there is always the next time again we will meet प्रोग्राम आगु नेबा मनोज भाई आपण टेक ओवर करंतु मु एबे सुस्मिता मैडम को रिक्वेस्ट करबी ओडिसी रो प्ले करबे ता परे परे हमर प्रशांत सामंतराय अछंती से भजन करिब तो play it.
जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी नयना पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी नयना पथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे सहज बलभाद्रेण बलिना शुभाद्रा मध्यस्थः सकल सुर सेवा शरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे जनांद कित सकता सकदति गन्नाति जगतिनिता जनांद कित सकता सकदति गन्नाति जगतिनिता जय जय दासिना सक जय दासिना दासिना के दासिना के दासिना के दासिना के जय जय दासिना सक जय दासिना दासिना के दासिना के दासिना के दासिना दासिना के देवी 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 जय 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 ଏବେ ପାରମ୍ପରିକ ଭଜନ ବୋଲିବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାମନ୍ତ। प्रशांत प्रशांत आज्ञा भाई हाँ प्लीज स्टार्ट। हेलो जय जगन्नाथ। तो ये साउंड समझ सुना जाए तो ठीक से जोड़े कंफर्म कर दियो। हाँ सुबह जाऊँ। बस सुनाओ जी आज्ञा।
तो एठी जेतिकी मोर सब गुरुजन मान अछंती समस्ती मोर प्रणाम एवं जो हमर आज चलीला जगन्नाथ ऊपर जो स्तुति सब चलीला मु भी शुणुली बसिकी तो मते बहुत ही बढ़िया लगिला तो जाहो तो मैं चाहूँ गोटे गीत भी भगवान जगन्नाथ महाप्रभु ऊपर धन्यवाद समस्या चलो देते अगढ़ा मुझे मते महाबाहु तुलसी पिछिए मते महाबाहु राजा को मागिले राज्य दे सारसानी तो राजा को मागिले राज्य दे सारसानी तो तुम खूब मागिली देहु करू अबढ़ा मुठी मते महाबाहु महाबाहु केते कहा तू सब मु देखुछी मते दब तुखिया तम मन पछलछि चौबर गदानी बोली प्रभु बाजुची बाजाना पानी देले के माणी तुम पानी बमाणी मां हे शांत बड़ो प्रभु तुमे तो मोहर सबु हे शांत बड़ो प्रभु तुमे तो मोहर सबु निर्दय कहीं की आहे कृपाणु अबढ़ा मुठिए मते महाबाहु महाबाहु चौड़े रागी थे भोकरे मारी भी मणि मात मंतु निंदा कहीं की करीबी जानी भी कर्म बंध पटम कपाल ये से भर मोर सोया थारो
हाथे शून्य थाली फेरी जीवी भाव ग्रही हाथे शून्य थाली फेरी जीवी भाव ग्रही सरगोदर कृपाणु अबढ़ा मुठिए मते नीलु तुलसी पिछिए मते नीलु राजा कुमारिले राज्य देई सारंगी ते तो राजा कुमारिले राज्य देई सारंगी मकुमारी देयो काळू धन्यवाद। हेलो प्रसाद आपण आ गुटे भजन बोलुचंती कि नानी आशा करछि गीतटी संग्राम में नेक्स्ट प्रोग्राम को दिबा। अच्छा आज्ञा या पर आ गोटे तांकर जोड़ाई भजन कहैथिलो नहीं ए भजन टी माने भले सुना गला तो माने मु टिके साउंड सहित मु अटैचमेंट करथिली। ठीक है आज्ञा आज्ञा धन्यवाद आज्ञा। सुशीला मैडम देखंतु मिस्टर प्रशांत स्वीडन रु संग्राम भाई आगंतु ठीक है नेक्स्ट प्रोग्राम को दिबा संग्राम टाइम ही जाय हमें नेक्स्ट प्रोग्राम को दिबा सेट कलर टे टाइम लागछ त नहीं प्रशांत सामंतरा हो हमें नेक्स्ट प्रोग्राम को जाउछु काना हमर ऑलरेडी लेट हे गलानी। आज्ञा 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 ठीक अछि काहे ना मते एठी सेटअप कलर टिके टाइम लागछ तो आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बढ़िया बोलिले आपण बहुत बढ़िया बोलले भल लागिला बहुत बहुत धन्यवाद आपण। और नेक्स्ट प्रोग्राम हम जिबा ऑलरेडी आरंभ कर सालेनी म्यूट सुशीला मैडम और सौम्य दास स्विट्जरलैंड रु कि प्रशांत स्वीडन रु प्रशांत जी अछंती मु तम पोस्ट करते प्रशांत जी स्वीडन रु जदी आपण अछंती आपण अनम्यूट करंतु आपण 2 मिनिट आपण कहंतु सुनि पारछन मते आपण माने आज्ञा आज्ञा नमस्कार नमस्कार जय जगन्नाथ मु प्रशांत पाणिग्राही स्वीडन रु आमे 15-16 वर्ष लानी अच्छो इटे स्वीडन रे मालमो रे हमर एठी गोटे छोटे इस्कन अछि जोटा कि सबु जगन्नाथ कर एटलिस्ट रथ यात्रा सब वर्ष पालन करछन से माने हमु गोटे तांगा बोर्ड मेंबर भी माने एथर अगस्त 12 तारिख दिन पालन करिवु कारण टिके लेट हे गेला तथापि हमर पालन होछि गोटे रथ बना चलछि ता ऊपर टिके भलो एथर कराउछि आटी बहुत एटलिस्ट 500 खंडे भक्त जॉइन करिवे सेही प्रोग्राम टाको तार प्रोग्राम अछि हमर तो सेही बेले चाहछि आ किछ त माने एते कहि परिनि किंतु इस्कॉन तांकर एटलिस्ट इस्कॉन को थ्रू रे हमें जगन्नाथ को सब कार्यक्रम करि पारछे एठी ठीक है आपण केते ओडिया अछन सेठी
ओडिया ओडिया अछंती प्राय 20-22 जण फैमिली एठी पाखापाखी अछंती ता थोड़ा आ गोटे सिटी अछि हेल्सिंगबर्ग गोटे अछि सिटी सेटे बहुत जण अछंती कारण सेतरे टीसीएस रो बहुत टीसीएस और आईबीएम रो बहुत जण अछंती ओडिया फैमिली तो एटलीस्ट 50 खंडे तो ओडिया फैमिली रहउतबे पाखापाखी एरिया किंतु ओडिया पर्व पर्वाणी किसी आपण पालन करना दिवस पालन होची सेटा करा होची आ जगन्नाथ रथ यात्रा पालन होची सब रथ आ अन्य पर्व हमें अलग जिनस सब निजे निजे कर दउछ ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आपन को धन्यवाद धन्यवाद जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ हमरो भूमियो दास बाबू जी की स्विट्जरलैंड जॉइन करथिले कि ताकर नेटवर्क इश्यू जो से कटि आइछन मत कॉल भी करथिले से आ जॉइन कर पना तण आउरी आगु जीवा में प्रोग्राम में आगु बढ़िया कना डेली गेलानी जय श्री जगन्नाथ आउतरे हमरो सारा विश्व रु आज संध्या जोग देता समस्त जगन्नाथ प्रेमी भाई बहन को नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्माय बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय हमर श्री जगन्नाथ चिंतन चेतना वर्ल्ड तरफ हमर जो प्रति मासरे हमें जो वेबिनार करूछु हमर गत मासरे हमर ओडिया समाज नाइजीरिया तरफ हमर तांको सहयोग आम करथिलु ए मासरे आज बांगालोर जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट सहित आम करूछु आगामी अगस्त मासरे हमर तीटा कंट्री सहित कथा चली गोटे तांजानिया गोटे हूँ केनिया किंतु बर्तमान से माने किसी कन्फर्मेशन दे ना खूब शीघ्र से माने कन्फर्मेशन देले आम आपको जनइबू आमर यहाँ जो प्रति मासरे हमर श्री जगन्नाथ चिंतन चेतना वर्ल्ड तरफ जो मंथली वेबिनार करा जाउची हमर एटा चालू रहइबा विभिन्न देश विभिन्न ओडिया समाज विभिन्न जगन्नाथ मंदिर थ्रू आमे एटा को करि चालचु करिबो बहुत बहुत धन्यवाद आपण समस्त की जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ आमे एने अनुरोध करबा हमर श्री जगन्नाथ टेम्पल ट्रस्ट बांगालोर तरफ श्री पुण्यश्लोक खुंटिया बाबू जे कि धन्यवाद अर्पण करेंगे खुंटिया बाबू प्लीज जय श्री जगन्नाथ वर्तमान स्वामी ब्रह्मनिष्ठानंद सरस्वती महाराज जहाँ सब कहले कोटि कोटि प्रणाम और अद्भुत दिव्य दर्शन और प्रभु जगन्नाथ ऊपर जो तथ्य आलोचना कले से मैंने नूतन चेतना एवं प्रेरणा उद्भूत कलु हृदय धन्यवाद अर्पण करुच्ची कथारे अच्छी नाम तिष्ठामि वैकुंठे मुनीनां हृदय नच मद्भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठन्ति नारद वर्तमान आमर ठाकुरंकर जगन्नाथंकर आलोचना चली तेणु आमर आज आलोचना स्वयं भगवान भी उपस्थित अच्छा से प्रभु जगन्नाथ चरण कोटि कोटि प्रणाम श्री जगन्नाथ चिंतन और चेतना वर्ल्ड वाइड मैनेजिंग ट्रस्टी मिस्टर रमेश चंद्र बिस्वाल बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद और आमर मैनेजिंग ट्रस्टी कामाख्या पंडा बाबू आम बांग्लोर विषय बहुत किसी आलोचना कले तांको भी अशेष धन्यवाद जो ओडिसी डांस आज मधुलिता मिसेस मधुलिता महापात्र से जो अतिथि दास तांको भी बहुत धन्यवाद आगु बांग्लोर से सब ये मिसेस मधुलिता बहुत प्रोग्राम करती आज प्रोग्राम अति सुंदर होता से वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद SJCCWW ट्रस्टी और बैंगलोर टेम्पल ट्रस्टी दी थर अच्छा आम मनोज पात्र को बहुत बहुत धन्यवाद आज आम जो ये जोड़ी हो पार्छु आगु आम ये पाई नथलु मुंबई रू आमर डॉक्टर भगवान पंडा को बहुत बहुत धन्यवाद सी बहुत
आलोचना कले विषय प्रथम रु आउे स्वीडेन रु से प्रशांत बाबू मुजी आउ केते भी लंडन रु केते जॉइन करथिले तांको भी अनेक अनेक धन्यवाद। भुवनेश्वर रु हरप्रसन्न दास बाबू को भी अनेक धन्यवाद। आउ सुकांत साहू बाबू को भी अनेक अनेक धन्यवाद। तापरे भजन जो गाइथिले हमर प्रशांत समुद्र बहुत बढ़िया भजन गाइथिले तांको भी अनेक धन्यवाद। परिशेष रे ए जो इवेंट जी मैनेजमेंट करथिले तांको भी अनेक धन्यवाद। आपण मानक प्रेरणा सदा सर्वदा एमिति चली थाउ। आउ बैंगलोर श्री जगन्नाथ ट्रस्ट तरफ मु समस्त धन्यवाद जनाउची। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। मु स्वामी जी को अनुरोध करूची से दया कर शांति शांति पाठ करंतु। स्वामी जी मोर टिके गोटे क्वेश्चन थिला कि जदि 5 मिनिट क्वेश्चन आंसर सेशन रखा जांदा ताले भलो होंदा। मु स्वामी जन को किछि आमे जे कोनसी डिबेट रे नियादी होर किछि समय रखिथिले बहुत भलो हितांदा। आपनकर किछि प्रश्न अछि कि? मु कहरा थिला जे मंगल आरती स्वामी जी अछंती स्वामी जी स्वामीत्र ई प्रश्न मोर थिला जे मंगल आरती समय जोटा पुरी रे जोटा निर्धारित करा जायछि आमे ताकू फॉलो करिबा ना बैंगलोर रे जो मंदिर रे जो आमे जेमि करूछु सेही अनुसार आमे मंगल आरती को अनुसरण करिबा सेही गुटियो क्वेश्चन थिला और बहुत गुडे थिला किंतु वर्तमान तो समय हेलानी। नै मु कहूची देखंतु जदि आपण माने भारत रे अछंती आज्ञा ताहले श्रीमंदिर रीतिनीति जहाँ चली अवश्य श्रीमंदिर केतबेले विलंब होची केतबेले जहाँ होची श्रीमंदिर रीति अनुसार जीवा दरकार। किंतु धरा जो जने लंडन रे अछंती अमेरिका रे अछंती उदाहरण स्वरूप हम गोटे एवरेज टाइम धरिबा जे 5:30 रु 6:30 भितर मंगल आरती होची उदाहरण। किंतु जदि जने सिनसियर हेथिबो मन भितर जे टिके जोर थिबो से ऑनलाइन रे देखि दे परिबो। टेम्पल रे गोटे नंबर अछि से नंबर जे आपन पाखर नाही मु आपन मान देई देबी से टेम्पल नंबर 24 आवर्स ओपन। आपन राती 2टा कले भी से उठेबे जदि उठो नांती ताल मते कहबे बा एडमिनिस्ट्रेटर जणेबे से टेम्पल रो नंबर 24/7 ओपन हेकि रहिबो। से नंबर जदि का पाखर नाही आपन देई दोची आपन करि परिबे। बेले बेले से नंबर टा बेले बेले ऑफ थाए बा बेले बेले अतिरिक्त प्रेशर लास माने बंद कर दियंती से नंबर लिखि दियंती। फल से नंबर जे आपन एबे फोन करिबे पचारिबे एबे रीतिनीति कोन चली से आपको डिटेल कहबे रीतिनीति कोन चली से नंबर अनुसार करिवे। तबे प्रश्न होउची मंगल आरती काहे उद्देश्य कोन ठाकुर मु तारा उदाहरण अनेक देले वेकअप अर्ली जगन्नाथ भक्त भार जो कहूँ मंगल आरती पुरी रे मु रहूची मंगल आरती आरंभ 5टा बेलू लाइन लग जाऊँ कि धरा जो आज एकादशी भिड़ ताले प्रबल अच्छी टाइम डेरे होची ठाकुर दीप उठीगला टाइम अनुसार सब जिन चार मंदिर को आप उदाहरण स्वरूप बैंगलोर मंदिर को आपण मैंने जाऊँ बैंगलोर मंदिर रे जाइकि मंगल आरती अटेंड कर तेणु बैंगलोर मंदिर रे आपण मंगल आरती अटेंड कर ना घरे रही मंदिर अनुसार आपण अटेंड करिवे। हेलो घरे भी हमें पूजा करूछु तेणु मु चाहूतली जे घरे जदी हमें ठीक अछि आपण ताले बैंगलोर अछंती किंतु बैंगलोर खांतु बा दिल्ली रे रहंतु बा भारत रे जदी जो मान रहउचंती एवं घरे करिवे। उदाहरण स्वरूप बैंगलोर मंदिर मंगल आरती टा होची 5:30 उदाहरण गोटे कहबे जदि जो माने जाउचंती सेठी मंदिर भितर साक्षात भाव डायरेक्ट छिडा कि मंगल आरती करचंती ताले तांको पे सेटा दरकार नाही कारण से मंगल आरती समयटा को से पूरा फिक्स कर रखि जाउ। किंतु जदि घरे रहउचंती एवं भारत रे अछंती ताहले श्रीमंदिर अनुसार फिक्स करिवे किंतु श्रीमंदिर अनुसार केतळ लेट मते होउची। विशेष कथा होउची सूर्योदय ठारू 2 घंटा को फेडी देबे सेटा हला ब्राह्म मुहूर्त किंतु ब्राह्म मुहूर्त वाला को 4टा हे जाउची बा 4:30 हे जाउची। कॉमन टाइम गोटे ग्राउंड रूल जदि रखिबे 5 बा 5:30 आउ गोटे तार थम रूल होउची कोन सूर्योदय आपनकर टाइम जोन अनुसार जहा रहिला ताटू घंटे माइनस कर
टाइम जोन आपनकर कलकत्ता अनुसार बा दिल्ली अनुसार बा चेन्नई अनुसार एआईआर अछि टाइम जोन रो अनुसार सनराइज होछि 6:15 AM -1 आवर सिंपल ये किंतु जगन्नाथ चेतना यदि आप पूरा जड़ी होकर अच्छा सब बेले जानुंट पंडा बा क्या सहित आप लिंक अच्छी से कहूँ वर्तमान भोग उठिला वर्तमान ब्राह्म मुहूर्त आरती जाऊँगी आप फुल टाइम अच्छा आपनकर ऑफिस नहीं घर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं then you stay connected as per the things are happening in Puri. University. Yeah, I am. सूर्य पात्र बाबू किसी रेज करछन हैंड कोन कहबे हां आउ कोन प्रश्न को हरिओम स्वामी जी बहुत खुशी लागला आपण तो महात्मा पढि छ हां सुबुची आपण केले आया सूर्य बाबू कोन हरिओम स्वामी जी आपनकर कथा बहुत भल लागला आपण पर्सनली तो हम कनेक्टेड अच्छे बट एडा मोर ट्रस्टी मान पाखे गोटे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है गोटे सजेशन भी जिते जन अच्छा यही ग्रुपटा जो ता भितर किसी गोटे 5-10 मिनिट कहार भी हो रैंडमली आपण क्या भी कहि परिबे तांकर अनुभूति किछिरा जगन्नाथंकर अनुभूति एटा आउरी टिके समस्त को प्रेरणा दब आउरी आकर्षित करिवो जगन्नाथ प्रति तार केमिति भावना अच्छी सेटा टिके भलो मनोज भाई मोहन भाई मते टिके अनुमति दियंतु मो अन्य कार्यक्रम रे पुन जीवी आई थिंक ये प्रश्न उत्तर आमे दे परिबुनु वर्तमान आपण जा कहले ठीक सूर्य बाबू अनुभूति तो अनेक गुड़ाए अच्छी प्रभु जगन्नाथ विषय रे समस्त के पाखरे किछि ना किछि अनुभूति निश्चय रही जानि एडे बहुत लोक अछंती समस्त के पाखरे सब अनुभूति अछि आपण रैंडमली चूज करि परिबे का को नहीं वर्तमान समय नहीं 9टा 26 हे गलानी आजिर कथा कहूनी एमिति आर मासरे केबे जण को निश्चय निश्चय हमर आसन्ना मासरे पुनी प्रोग्राम हबो सेठी हम रखिबा आपण जॉइन करंतु हम निश्चय अनुभूति कहबो हमर रोमो टंकरी उठिबो हम भाई अनेक गुडे अनुभूति अछि आज्ञा निश्चय निश्चय बहुत किछि सेही दिन छर हमको बहुत किछि शिक्षा को मिलिबो सेही दिन छरे निश्चय 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 आज्ञा स्वामी जी शांति पाठ करबा शांति पाठ कला परे हमें प्रोग्राम रखिबा एडी आपण अनुरोध शांति पाठ आपण करिवे स्वामी जी the network issue है गौरण स्वामी जी कटि गले बोधे आसले आसले माइक ऑफ अछि अपन स्वामी का माइक ऑफ अछि स्वामी जी ऑडियो ऑन करंतु हां 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 स्वामी जी आपण वीडियोटा ऑफ करिवे जदि आपनकर वॉइस टा क्लैरिटी आसी पारे बेले बेले वीडियो नहीं किछ असुविधा नहीं आपण माने समस्त के चुप रहंती जाई जीवो नंबर 1 जो माने भाबुचंती जे नेक्स्ट हमर जो सत्संग हबो एवं पुरुषोत्तम महात्मा पढी नांती पढीबे समान टिके हाथ उठान आगे आगे ये बड़ खुशी रे कथा जो माने सत्यवादी लोक सन संग संग हाथ ना हमें पढी जो माने पारे बही नाही बही किनिया पे चाहउछन हाथ उठान
बही नाही किंतु आपण बही आ भितर आनिबे बा ऑनलाइन रे आपण ऑर्डर कर परिबे ये होची फास्ट स्टेप एति करंतु तापरे जो माने ऑर्गेनाइज करूछन ऑनलाइन तो कारण प्रत्येक समस्त पे गोटे लेखा मुहूर्त इंपोर्टेंट वर्ल्ड वाइड हिसाब रे देखिया गले अटेंडेंस बहुत कम रहउची 55टा कंट्री थरो अधिकार रहला लको 50-60 अटेंडेंस रहउची तेणु समस्त को अनुरोध जो माने ऑर्गेनाइजिंग कमिटी अछंती बा विभिन्न सेंटर कनेक्ट करूछंती सेमान ता गोटे सिस्टम रे पकांतु हमें ओटा मासे करबा सप्ताह रे थरे एकाठी होउचे एई समयटा हमें घंटे दबा ठाकुरंक सेवा आ मते टिके अनुमति दियंतु आ समस्त को धन्यवाद जणाउची शांति पाठ करियो स्वामी जी आगे आगे prayer for the peace of the whole world, prayer for all those who might be in need of prayers, prayer for the soldiers in the war field, prayer for the patients in the hospitals, prayer for each and every one of you, those who are sitting here, prayer for your family, relatives, prayer for your good health, peace of mind, and devotion at the feet of Lord Shree Jagannatha Mahaprabhu. Jagannath, 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 pahi mam, Jagannath, 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 rakhyamam, Jagannath, 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 pahi mam, Jagannath, 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 rakhyamam, Jagannath, 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 pahi mam, Jagannath, 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 rakhyamam. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, pahi mam, Mahabahu, 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 rakhyamam. Om Shri Jagannathaya Namaha, Om Shri Jagannathaya Namaha, Om Shri Jagannathaya Namaha. Om Trayambakam Jajamahe Sugandhim Prashtibardhanam Urvarukam Iva Bandhanan Mrityor Mukhiyamamrutat. Om Trayambakam Jajamahe Sugandhim Prashtibardhanam Urvarukam Iva Bandhanan Mrityor Mukhiyamamrutat. Om Trayambakam Jajamahe Sugandhim Prashtibardhanam Urvarukam Iva Bandhanan Mrityor Mukhiyamamrutat. Om Shanti Shanti Shanti. Krishna Krishna Mahajogin Bhaktanam Abhayankara Govinda Paramananda Sarvameva Samanaya. Krishna Krishna Mahajogin Bhaktanam Abhayankara Govinda Paramananda Sarvameva Samanaya. Ugravira Mahavishnum Jalantam Sarvatomukham Nrsingham Vishanam Bhadram Mrityu Namamyam. Om Ugravira Mahavishnum Jalantam Sarvatomukham Nrsingham Vishanam Bhadram Mrityu Namamyam. Om Ugravira Mahavishnum Jalantam Sarvatomukham Nrsingham Vishanam Bhadram Mrityu Namamyam. Om Swasti Prajabhyah Paripalayantam Nayena Margena Mahimahisa Go Brahmanebhyah Subhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Kale Varshattu Parjanya Desayam Khevarahita Asubhani Nirachaste Tanoti Subhasantatim Sutimatrena Jatpunsang Tan Brahmatang Nangalam Vidum Omkarata Sabda Sodhavino Brahmana Pura Kantrvitva Vinirjato Tasmat Mangalika Bhavav. Om Atha Om Mangalang Ashmad Guruna Mangalang Mestu Sarveshang Mangalang Bhavatu Sarveshang Purnang Bhavatu Sarveshang Shantir Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Shantu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschi Dukkhavag Bhavet Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityur Ma Mrutangamaya Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. O adorable Lord of mercy and love, salutations and prostrations unto thee. Thou art omnipresent, omnipotent, omniscient. Thou art Satchit Ananda, the indweller of all beings. Grant us an understanding heart, equal vision, balanced mind, faith, devotion, and wisdom. Grant us inner spiritual strength to resist temptations and to control the mind. Free us from egoism, lust, greed, anger, hatred, and jealousy. Fill our hearts with divine virtues. Let us behold thee in all these names and forms. Let us serve thee in all these names and forms. Let us ever remember thee
Let us ever sing thy glories. Let thy sacred name be ever upon our lips. Let us abide in thee forever and ever. Let us abide in thee forever. Om Shanti, Shanti, Shanti. ଦେଖିବା Jai Jagannath. ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।